मेरा नाम निवेश अग्रवाल है। मैंने अभी अपनी 12th क्लास पास की है और जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 60 सिक्योर किया है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 12th क्लास श्री गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है और 10वीं तक सेंटेंस कॉन्वेंट स्कूल में था। ये एग्ज़ाम में मोस्टली इसलिए था कि कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए एक तो, और दूसरा एक देखने के लिए कि मैं कितना कर सकता हूँ, क्या अचीव कर सकता हूँ। इसमें मेरे श्री चैतन्य में टीचर्स वगैरह ने बहुत हेल्प की मेरी इस जर्नी में, और ऑब्वियसली मेरी मेहनत काफ़ी रही है, बट टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया हर लेवल पे। 11 से लेकर 11th क्लास में, 12th क्लास में, 10th क्लास में भी हर उस लेवल पे सपोर्ट किया उन्होंने काफ़ी, और उनके कारण ये पॉसिबल हो पाया। मोस्टली मैंने उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया एग्ज़ाम की तरफ, कि अभी मेरे को जो पढ़ना है वो इसके फोकस में पढ़ना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कि इसके ज़्यादा पढ़ना है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही रैंडम पढ़ो, और एग्ज़ाम्स वगैरह को काफ़ी सीरियसली देना। मोस्टली मैंने इसमें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बेसिक्स सारे अच्छे से वो किए क्लियर, और बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी किया, बट मोस्टली फोकस मेरा सारा बेसिक्स पे रहा कि एक बार इनको पूरा अच्छे से कर लें। मोस्टली डिस्ट्रैक्शन मेरा फ़ोन रही होगी, क्योंकि उसको मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता कर, बट जब भी मेरे को लगता है कि अच्छा फ़ोन मैंने आज शायद ज़्यादा यूज़ किया, फिर इसके बाद मेरा कोई फ़र्क पड़ा है कि काम वगैरह नहीं हुआ, उसके अगले दिन ही मैं थोड़ा सा कम कर लेता कि ठीक है मेरे को इससे ज़्यादा नहीं करना, या फिर मेरे को पता है कि इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगाया है तो उसको कंट्रोल कर लेता था कि ठीक है इस पर इससे टाइम नहीं लगाऊंगा। तो उसने काफ़ी हेल्प की मेरी कि फ़ोन वगैरह को थोड़ा सा लिमिटेड यूज़ करना, कि पढ़ाई के अलावा लिमिटेड यूज़ करना। डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए एक ही तरीका है कि खुद को थोड़ा सा वो करना पड़ता है कि ठीक है मेरे को करना है काम, जब तक वो नहीं आएगा तो डिस्ट्रैक्शंस कम नहीं होंगी। अगर खुद को कहे कि ठीक है मेरे को डिस्ट्रैक्शंस कम करनी है तो अपने आप होने लग जाएंगे कम। फिर तो अगर आप करना चाहोगे तो तरीका मिल जाता है करने का। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो पेरेंट्स ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया हर लेवल पे, कि मेरे को जो भी करना है वो मैं कभी मना नहीं करते कि ठीक है अगर इस लाइन में आना ये करो, अभी अच्छा इतना पढ़ना है, आज नहीं कुछ हो रहा या तबीयत अगर ठीक नहीं है, तो उसके लिए पूरा सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स ने भी इनकी पूरा सपोर्ट किया अच्छे से पूरे 2-3 साल। जो पढ़ाया अच्छे से पढ़ाया, या फिर कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा वो थे कि ठीक कोई दिक्कत हो हमें बता दो, हम ठीक कर देंगे आपके लिए। और फ्रेंड्स वगैरह ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, कि कोई भी डाउट वगैरह तो आपस में काफ़ी डिस्कशन वगैरह कर लेते थे, कि कोई भी डाउट हो टीचर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, कि आपस में डिस्कशन वगैरह सारा कुछ खत्म हो जाता था हमारा। तो फ्रेंड्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा 2-3 सालों में। अभी तो मृणाल सर हैं, मतलब उनके साथ मेरी एसोसिएशन काफ़ी लंबी रही है। सबसे पहले उन्हीं के कारण मैं यहाँ आया था 9th क्लास के एंड में, तो उनके साथ काफ़ी लंबे टाइम से मेरा रहा है, और फिर 3 साल में काफ़ी अच्छे रिलेशन बन गए कि उनको काफ़ी ट्रस्ट हो गया उनमें। एग्जाम के रिस्पेक्टिव उन्होंने एग्ज़ाम के लिए एक तो अच्छे से प्रिपेयर किया, सिर्फ मैथ्स के रिस्पेक्टिव में नहीं, बट ओवरऑल भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, फिर घबराना वगैरह कैसे नहीं है उस सब में एक तो, और ओवरऑल भी कि मेंटल स्टेट अच्छी रहे एग्ज़ाम के वक्त। अगर एग्ज़ाम के रिस्पेक्टिव में कहें तो मेरा तो ये रहेगा कि इसके 3 सब्जेक्ट्स हैं एग्ज़ाम में, तो किसी को बिल्कुल ही छोड़ना भी नहीं है, बट जो स्ट्रेंथ है उसको लेकर चलो, वीकनेस को भी थोड़ा अच्छा करो, बट ये नहीं कि किसी को बिल्कुल छोड़ दो कि ठीक है ये नहीं होता मेरे से, तो जो नहीं हो रहा उसको भी ट्राई करो कि एक बेसिक लेवल तक हो जाए, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। क्योंकि अगर बेसिक लेवल तक कुछ नहीं होगा तो बाकी सारे कवर अप नहीं कर पाते इतने अच्छे से। बाकी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से थोड़ा सा अवॉइड करो, और टीचर्स वगैरह को अच्छे से फॉलो करो इन 2 सालों में, कि उन्होंने आपसे पहले भी काफ़ी को पढ़ाया तो उनको पता है अभी क्या करना है, कि अगर कोई सिचुएशन है उन्होंने शायद पहले फेस कर रही होगी स्टूडेंट के साथ, तो उनको उसमें पता है कि ठीक है इस सिचुएशन के लिए ऐसे डील करना बेटर रहेगा। मैं ये कहूँगा कि 2 साल की जो मेहनत है उसमें इंजॉय भी अच्छे से करो और पूरे फोकस से पढ़ो, तो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। I am Vedant Saini. I study in class 11th in Bhavan Vidyalaya, Chandigarh. I am a resident of Chandigarh itself. I've been in Bhavan Vidyalaya since grade school, since grade 1. And currently I am studying at Sri Chaitanya, Chandigarh. I participated in the International Maths Olympiad, the IMO 2022, this year in July. Yeah, from 9 to 16 July. And I secured a bronze medal in that Olympiad. So the International Maths Olympiad is not a routine maths exam. I mean, see, in school you know the methods, you just have to apply them
to a perfect calculation, to a perfect answer. But in the Olympiads, you have to develop the method itself. Like they teach you in school how to divide. You just do that, make that table and just divide it, make those lines, divide and stuff. But what happens in Olympiads is you don't know the method. You have to think over it yourself, develop it on the spot, and then go about solving the problem. So this involves quite some mathematical maturity and problem solving abilities, and this has been a journey for many years. Yeah, since late 7th, since end of 7th, I got exposed to such math problems, and from then on I've started doing Olympiad maths. The longest. Yeah, doing Olympiads, I mean, it requires huge amount of self motivation, because what you have to do, it's mainly thinking. I mean, the theory caps at some point. At some point, everybody who does that kind of maths knows the basic theory, the ground rules. But what differentiates people then is how they are able to think, how much out of the box they are able to think. And that thing, that comes only with practice. I mean, no one can infuse that into you, no one can teach that to you. So the majority of my time doing Olympiads has been solo. And I mean, yeah, you can say my parents have been supportive in that time. Like, I was able to devote all my time to doing maths and problem solving. And the way to start maths Olympiads, at least that's what I did, was to solve, or if you are not able to solve, which may most probably be the case, to look up problems from previous Olympiads, from easier Olympiads, problems on the easier side. Like in India we have regional maths Olympiad, but there's a site called artofproblemsolving.com where you can have a look at the major Olympiads of many countries around the world. So that forms a huge source of problem collections, and the beginning way is to just get yourself motivated and to just ignite that spark inside you to think about problems in such a novel way, and yeah, to grill on problems, easier problems, then to more difficult ones, and then to more ones. I mean, if you can find someone who has done this kind of math before, so he or she can guide you towards what your specific level at that point of time is and how to move on. So in my case, that teacher, that mentor was Mrinal sir. He, in the initial stages, he helped me a lot in giving quality problem sets, handouts, sources where to read theory from, that building that basic ground level theory, and problems, respective problems to apply that theory on. Yeah, that formed a strong foundation for me. I applied for SCORE in 7th grade and secured the first position that year, and I had heard of Mrinal sir then and wanted to meet him. So yeah, I went to Sri Chaitanya and they offered me to have a meeting with Mrinal sir, and that's how I first met with him. Yeah, I had a lot of distractions in my case, as I was mostly studying during the COVID time, the pandemic. My 9th and 10th grades so were spent at home with devices and computers and mobiles. So I think you have to set your priorities. What comes first in your priority lists, you go towards that. You are self-driven towards that. So once you set your priorities straight, I mean, distractions come at a lower level, and therefore at some point you stop getting that much distracted as it was before. Yeah, so I think if you have interest in maths, then definitely go for it, because after some point it doesn't test your math skills, it just tests your thinking ability. And if you got a sharp mind or haven't developed it, this is a great opportunity to do that. And having a sharp mind is really the key
in today's competitive world, extremely competitive world. So definitely go for it. Yeah, maths Olympiads are a great way to hone your problem solving abilities and your thinking skills, and I think that's what matters today in today's future, in today's extremely competitive world. Because if you have a skill, then why not own it? And Olympiads are a great way to do just that, because after a point, doing theory doesn't help, and in life also, cramming stuff or memorizing stuff won't help after a point. You have to think outside the box and solve problems, and that's basically just it. That's the Olympiad. The future goals, I'm in class 11th right now, so I have 2 years for JEE, which I intend to appear for. And yeah, if I get selected, if I'm fortunate enough to get selected for the next year's IMO team, yeah, I will definitely go for it. Yeah, for this year's IMO, I went to Oslo, Norway. There were people from more than 100 countries, and it was a really awesome experience meeting all of them. I mean, it was a melting pot of cultures over there, and we had a lot of fun activities to interact and get to know each other. Like, we went to amusement parks, we had field trips together, and that is I could say once in a lifetime experience, which you can't get sitting around in a place or reading about it in some article. It's one you've got to experience yourself.